Hey everybody, I hope you guys are doing well. So, firstly, I decided that I have to do it in a silent mode, but now my mind shuffled. So, right now, I hope you guys can hear me. Tell me in the live chat. So, now after some minutes, the title will be changed. The title will be changed, and the new title will be This is Hindi and in Urdu. So, what I was observing where my eyeball is that these were equal highs on 1 minute chart. ये equal highs थे. Market took that reaction on off that 4 hour BC and utilized this fair value gap like inversion fair value gap and then reject it. If you watch 15 minutes fair value gap, 15 minute time frame, ये 15 minute का chart है. So look at that. Firstly, for sells, I was looking at this fair value gap, जो red में, to trade to take this liquidity. It took. Now this is a balanced price range. Why? Because when BC and CB came together, come one another uh, in a same neighborhood, then that will be what balanced price range. Balanced price range की confusion आपकी दूर होनी चाहिए. That balanced price range happens when BC and CB forms in a same leg, one leg up, one leg down. So my interest is on this buy side liquidity, which is this equal highs. We took liquidity. We are coming from 4 hour fair value gap, which is higher time frames fair value gap. So my interest is on this 1 hour CB. मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट इसमें ट्रेड करेगी, लेकिन मैं बाय नहीं ले रहा, ना ही मैं सेल ले रहा हूँ, and that is not an advice for you as well. So now we are inside balance price range, and I'm watching it as well. I will request all of you guys, if you are watching for the very first time, please make sure to subscribe my YouTube channel and hit a thumbs button, and because it will help me a lot. मैं ये नहीं देखना चाहता कि यहाँ से all the way कोई market up move करे. I wanna see some sort of movement into this fair value gap. So let it make simple. So this white color fair value gap is which is not balanced price range. It's BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. So now I wanna see कि market इसके अंदर trade करे. It is not an invitation for you folks to take sell. No, 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 no. You won't take sell. I'm watching this and the next candle to drop into it. Why? We are rejected. We reject from 15 minute fair value gap. Therefore, अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये इस BC में आए. That's what I'm looking at. See, that's a difference. That's a narrative. We took that high, came lower. I was not interested in buy, neither interested for sells. Again, reject from 15 minute inversion. And now I was saying with lot of confidence that this market can trade to this BC. Yani, after having multiple confirmations, now I said it can trade into this BC. So that is narrative, folks. And you find this type of narrative with very, 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 very precise movements in some only few people's live streams, in only few people. Now I want to see this candle to drop into it. इस candle को aggressively drop होना चाहिए, not कि ये all the way up आए और trade करे इसके अंदर. That's what I don't like. मैं नहीं देखूंगा इसको, पसंद नहीं करूंगा. So my eyes also jumping on this little thing, which is what inversion fair value gap. My eyes are also focusing on this little. ये white lines price को reject करना चाहिए. This is not supply and demand. This is not some indicator. It is what fair value gap के नीचे जब candle की bodies close हो जाएं, then this fair value gap or any fair value gap should act like what? Inversion. Okay. So original inversion resides on these two lines. इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, लाइक ब्लू, सो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको समझना. Next or very next candle, I wanna see drop into it. Don't take trades on my observation. Don't take trades on my wordings. Because if you lose money, it's your fault, not mine. And if you make money, it's your luck. And it's your money, not mine. I'm watching 3 minutes chart. If you have any question अभी तक के लिए, you can ask. I'm watching live chat. You have option for live chat.
एलएलसी भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपका यूट्यूब पर बिगनर टू एडवांस कहाँ से प्लेस। सो इफ़ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आए हो और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप लोग 2023 की मेंटोरशिप से स्टार्ट करें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। So you have to start somewhere around 2023 mentorship, and you will then try ICT advanced concepts playlist, और स्पेशली लाइव स्ट्रीम्स को मिस नहीं करना। इफ़ यू मिस द लाइव स्ट्रीम्स देन फिर आपने सब कुछ ही मिस कर दिया, फिर आपने कुछ भी नहीं किया अगर आपने लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखी तो। देयर इज एन फेयर वैल्यू गैप, आइडली आई वांट सी रिजेक्शन फ्रॉम दैट। मैं उसको भी हाईलाइट कर दूं, लेकिन चीज़ें ना इतनी ज़्यादा हो जाएंगी चार्ट्स पे कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एज ए न्यू ट्रेडर। मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ क्लैरिटी, आपके माइंड में क्लैरिटी है। सो दिस रेड रेक्टेंगल इज व्हाट, 1 मिनट CB, SIBI, जो कि सेल के लिए फेयर वैल्यू गैप होता है, पर इससे आसान अल्फाज में मैं नहीं बता सकता, और इससे आसान कुछ भी नहीं है जितना मैंने आसानी से बता दिया। SIBI। अब किसी को अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो उसकी बदकिस्मती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। I'll, I have nothing to say about some lazy peoples. This candle should act like order block and reject this. I can be wrong and it can come up and take these highs, and still after taking these equal highs can go lower again. अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन? सी, हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 10 o'clock, दैट वाई मार्केट इज डूइंग choppy price. That was the clean setup, this one. That was the clean balance price range entry, this one. That was a clean sell. उसके अलावा अभी कुछ भी clean नहीं है. So I'm not interested in buying, not neither interested in selling this market. समझ रहे हो? डिफरेंस चेक करो. Because my interest totally resides, मेरा सारा इंटरेस्ट इस बाय साइड पे और इस वाली सीबी पे। लेकिन याद रख लो ये कभी भी नहीं होगा, हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले कि मार्केट इसमें ट्रेड कर जाए। अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे इसमें ट्रेड कर गई उससे पहले, फिर शायद हम अगेन लोअर प्राइस की तरफ मूव कर सकें। वी गॉट रिस्पेक्ट फ्रॉम अपर फेयर वैल्यू गैप। मुझे लाइव चैट में बताइएगा कि अगर आप लोगों में से कोई रोज़ मेरी लाइव स्ट्रीम में आता है तो आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिलता है, कुछ मदद मिलती है, सीखने को कुछ नया मिलता है, या बस इंजॉय कर रहे होते बैठ के, टाइम वेस्ट कर रहे होते। आई थिंक इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि इट्स अ टाइम वेस्टेड, सो यू आर इडियट प्रोबेबली। लेकिन अगर आप इस पे नोट्स बना लेते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें ट्रांजिशन हो रही है आपके माइंड की। आपकी माइंड की स्टेट जो है वो पैरानॉइड से चेंज होके एक न्यू लेवल पे जा रही है कि यार मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आपका ये माइंड सेट है तो फिर नो नो, आई एम आस्किंग कि आपको कुछ हेल्प भी मिलती है या नहीं, ये मुझे बताना है। ये नहीं बताना कि मैं आता हूँ या आती हूँ। Because lot of ladies watch my YouTube channel as well. I was looking on stats, there were more than 20% females. Okay, so don't get annoyed by these numbers, folks. I'm relaxed, calm, eating biscuits, not in a rush to trade any setup, because there is no setup in my mind. अगर कोई noise आ रही है तो मैं इसके लिए sorry, because I'm eating biscuits. I'm loving that because the weather is too cool. And so अब नैरेटिव बताता हूँ आपको। दिस कैंडल, देयर इज एन फेयर वैल्यू गैप जिसके ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन हम M15 की इन्वर्जन के नीचे हैं अभी तक। इसके ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज नहीं कर सकी 15 मिनट पे, नॉट 1 मिनट। साइडली मैं ये देखना चाहता हूँ क्या अगर इस हाई को टारगेट करना है मार्केट ने, तो ये एक पॉइंट है, ये फेयर वैल्यू गैप। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ। दिस लिटिल थिंग, इसका कलर मैं वाइट ये कर देता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट को यूटिलाइज करना चाहिए अगर इस हाई को टारगेट करना है। तो हम इस हाई को, किस हाई की बात करें, इसके ऊपर मैंने वाइट लाइन ला के रख दी है, विच इज़ दिस हाई।
अगर मार्केट को ट्रेड करना है ना तो आइडली इस फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना चाहिए, नॉट दिस वन। हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लेस प्रोबेबल चीज़ें हैं। हाँ भाई, ड्रैग नाइट गेमिंग, व्हाट्स योर रियल नेम आई डोंट नो, एंड वेयर यू फ्रॉम आई डोंट नो, बट डू माई लाइव स्ट्रीम हेल्प यू? मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग दिस कैंडल, कि क्या इसको रिस्पेक्ट मिलती है अपर पोर्शन से और ट्रेड करे इसके इस बाय साइड पे। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम fucking tired. I'm tired to tell you that buy side liquidity resides above the highs and sell side always एक लो हो, multiple lows हो, उनके नीचे होती है। अब मैं थक चुका हूँ ये बता बता के, and I will never, I think मेरी कोई भी ऐसी लाइफ स्ट्रीम नहीं जिसमें नहीं ना बताया हो कि यूटीसी -4 की इंपॉर्टेंस क्या है। वो न्यूयॉर्क का लोकल टाइम है जो कि आने वाले कुछ मंथ्स में शिफ्ट हो जाएगा यूटीसी -5 पे ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ टाइम जोन चेंजिंग, क्योंकि गर्मी से सबको पता ही है how summer and winter goes on in every country, whether you live in India, whether you live in Bangladesh, whether you live in China, Russia, Iraq, Iran, Pakistan, all these countries, this candle I'm watching, क्या ये इस green candle के ऊपर close करती है? So let me zoom in. I'm talking about this candle to close outside of this green candle, then it can send it higher, otherwise it can go into this fair value gap. See, that's the difference. So I'm not looking for buy, neither looking for sells, just observing price. और जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। दैट व्हाट आई लाइक। नाउ आई वांट सी क्लोज कैंडल की बॉडी इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो, दैट्स व्हाट आई लाइक। मैं ये नहीं देखना चाहता कि इसमें ट्रेड करो फिर रिजेक्ट कर दे जैसे ये कर रहा है अभी तक। लेट मेक इट सिंपल, यस। सो नाउ आई आइडली वांट सी कि कैंडल की बॉडी, ये जो कैंडल अपनी है इसकी बॉडी इसके बाहर, इस ग्रीन के बाहर करे क्लोज, दैट्स व्हाट माय आईज आर लुकिंग फॉर। I want to see 5 minute chart for a moment. 5 minutes chart, 1 minute chart, shuffling through all of that. If somebody is watching for the very first time, अगर कोई पहली दफ़ा देख रहा है तो must subscribe, must share it with your family and friends because it will help them a lot if they are in trading. Don't share my YouTube channel to some idiot who don't know anything about trading. See, expansion came. I told you on this candle I want to see close above this candle and it did it. Now I don't want to see कि ये candle drop करे, direct go into this buy side and it did like a magical move. Isn't it amazing? मैं YouTube पे सबसे लो लेटेंसी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मैं कोई वर्ड्स बोलूँ वो आप तक डिलीवर हो, लेकिन कुछ ना कुछ सेकंड्स का डिले तो होता ही है, क्योंकि YouTube के सर्वर्स डाटा को कंपाइल करने के बाद आप तक पहुँचा रहे होते हैं। सो इट्स लिटिल बिट ऑफ डिले, लाइक 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स का डिले होता है जब मैं बोल रहा होता हूँ। तो दिस मार्केट इज़ ओपन, यू कैन सी, यहाँ मैंने अपना माउस रखा है तो वो आपको दिखा रहा है कि मार्केट ओपन है। कि कोई मार्केट रीप्ले नहीं है, इट इज़ नॉट अ मार्केट रीप्ले, इट इज़ नॉट फकिंग सम आफ्टर द फैक्ट, इट्स ऑल लाइव। It's real, and you can do these things as well on your own, but you need experience. There we go. It punched that high. I wanna see क्या ये इस buy side की तरफ जाता है या नहीं. That's what I'm looking at. When you do backtest, when you study moves, when you journal, then your real trading comes into play. Then your growth comes into play. Then you'll become financially strong, mentally strong, emotionally, psychologically. Then you will become strong. रिमेंबर, आपने न्यूज़ पे आपके लिए एक टास्क है, मैं शायद आप लोगों के साथ ज़्यादा देर लाइव स्ट्रीम में नहीं रहूँगा,
like for more 5 or 7 minutes. I will then quit this live stream. But my interest resides on this buy side liquidity. अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँ तो आपको easily ये चीज़ें समझने को मिल जाएंगी. I wanna see this highs, these two equal highs जो white line में है जिसके ऊपर buy side liquidity mention है, इसका कलर हम black कर देते हैं. So I wanna see this liquidity to get engaged at or after news, and market can trade into this 1 hour fair value gap. That's what I'm looking at. क्या यहाँ तक ट्रेड करती है नहीं? That's what I'm looking at. And I can be wrong, but please don't take buy and don't take any sell on my wordings, because it's your loss, it's your responsibility, not mine. So that's a financial risk which you have to accomplish on your own. I'm just here to show you how these price, how market moves, and how market makers book price on a certain levels all day long. Now, if they want to use this high as a ground liquidity, then they that is the point. ये इन्वेरिएंट जो है इस मार्केट को सेंड हायर कर सकता है, लीव कर सकता है. इट कैन सेंड इट लाइक अ ट्रेन टू और सेंड इट. इट इज़ अ फ्यूल फॉर दिस रॉकेट टू गो टू दिस बाय साइड. यहाँ पे अब मेरी वाइट लाइन पड़ी हुई विच इज़ दिस हाई. समझ लो कि ये एक रॉकेट है और ये रेक्टेंगल जो है ना, इन्वर्जन जो है, पॉजिटिव इन्वर्जन, ये एक फ्यूल का काम कर सकती है इस मार्केट को सेंड हायर करने के लिए. दैट्स व्हाट माय फोकस इज ऑन. I'm calculating, I'm watching in my observation, in my mind. That's how I calculate these things. I don't want to see this candle to trade to the lower portion of this week. If it trades, then it can go into this fair value gap. There we go. And why it is happening कि मार्केट एक लो को लेने के बाद हाई को ले रही है और हाई को लेने के बाद लो को ले रही है, तो you have to watch economic calendar, because if you are trading without economic calendar, then you are doing nothing. Then you are probably gonna absolutely gonna lose money. Then you don't find best setups. 9:45 you will find an final manufacturing PMI which is low impact news, and 10 o'clock where ISM manufacturing high impact news gonna happen in front of everybody. And it's right now 8:46 of US. अभी 1 घंटा बाकी है मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ के अंदर तकरीबन. So I don't have any clear setup. You also don't have any clean setup at all. So please don't force setups. Please don't do anything. So मेरा interest buy side liquidity पे है जो कि ये equal highs है, and also that is 1 hour BC, 1 hour fair value gap which is below the marketplace. So that where market can gravitate to, but I don't like that. If it did, if it can do, if they do that, so I'm leaving this फॉर योर इंटरेस्ट. क्या मार्केट इसके नीचे रहते हुए रिजेक्ट होते हुए ये सारे लोज को एक्यूमुलेट करती है और इस 1 आवर के बीसी में आती है और फिर रिजेक्ट होती है, ये यहीं से कहीं से रिजेक्ट होने के बाद इस बाय साइड को इंगेज करती है. ये आपने अपनी असाइनमेंट के तौर पे देखना है. वी विल डू अ लाइव स्ट्रीम इंशाल्लाह टुमारो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ. माई इंटरेस्ट इज ऑन बाय साइड लिक्विडिटी. मैं सेल नहीं देख रहा, मैं बाय साइड की तरफ देखूंगा. लेट्स सी व्हाट गोना हैपन. You have to note that in your charts. Until next time, be safe.